नमस्कार भारतीयों, हम एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं जिसका मुख्यालय मुंबई के तट पर जहाज से है। हाल ही में हमारे पास रिपोर्टें हैं कि ऑस्ट्रेलिया परमाणु मिसाइलों की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था। पहली लहर 3 दिन पहले रूस थी और अब दूसरी लहर यूके थी। हमारा अगला अपडेट कि सरकार ने काम करना बंद कर दिया है और जॉर्जिया परमाणु हमलों से गिर गया था। हालांकि उन्होंने केवल 67% संक्रमितों की जान ली। और अंत में टीके निम्नलिखित में सिद्ध हुए। फाइजर PX में 75%, ब्रोनवेक में 15%, एस्ट्राजेनेका का एक वैक्सीन है जिसे AZ12PX कहा जाता है, इसमें 83%, स्पुतनिक PXV में 99.8% और यूरोपैक्सवैक में 100% है। AZ12PX और यूरोपैक्सवैक वायरस को रोकने के लिए भारत आ चुके हैं। वो समाचार अद्यतन था। 25 जनवरी को भारत के पतन के बाद से हमें कहीं और से परमाणु हमले का अनुरोध करने की आवश्यकता है और इस समय रेडियो प्रसारण अभी भी उपलब्ध हैं। यह भारत की अनंतिम सरकार का संदेश था। कृपया सतर्क रहें। Hello, Indians. We are established a provisional government, headquartered from the ship off the coast of Mumbai. Recently, we have reports that Australia was hit by the second wave of nuclear missiles. The first wave was Russia 3 days ago, and now the second wave was the UK. Our next update that the government has ceased function and Georgia was fallen by nuclear strikes. However, they only killed 67% of the infected. And finally, vaccines was proven in the following. Pfizer PX has 75%, Bronvac has 15%, a vaccine from AstraZeneca, is called AS12PX, has 83%, Sputnik PXV has 99.8%, and EuroPXVac has 100%. Arizona 12PX and EuroPXVac has arrived in India to contain the virus. That was news update. Since the fall of India on January 25th, we need to request a nuclear strike from elsewhere and radio broadcasts are still available at this time. That was a message by the Indian Provisional Government. Please stay vigilant. Αυτή είναι η τελευταία μετάδοση από την Κυπριακή κυβέρνηση. Έχουμε επιβεβαιώσει πληροφορίες για επίθεση στον πρόεδρό μας από μολυσμένους. Ένας πρόεδρος μετατρέπεται τώρα σε ζόμπι. Καθώς παρακολουθείτε τώρα την τελική εκπομπή, σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, γιατί όταν μένετε έξω για περισσότερα από 16 λεπτά χωρίς μάσκα, κολλάτε τον K17, χδί, ο οποίος είναι ένας ιός ζόμπι από τον ντου. Σε άλλες ειδήσεις, το ΙΠ και η Κροατία έπεσαν στα χέρια του K17, χδί. Και τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να χτυπηθούν από πυρηνικούς πυράβλους από τη Ρωσία. Πρέπει να τερματίσουμε τη μετάδοση αμέσως. Χωρίς πρόεδρο δεν υπάρχει χώρα. Το ρεύμα και το φυσικό αέριο θα διακοπούν αύριο στη 13. Αντίο Κύπρο. Θα παίξουμε τον εθνικό μας ύμνο για την Ελλάδα και την Κύπρο για μια τελευταία φορά. The following message was transmitted at the request of the United States Provisional Government and the Centers for Disease Control and Prevention. This is not a test. I repeat, this is not a test. Since our country fallen on January 14th, an air raid has occurred in all of the United States. At 10:30 p.m., we have detected 55 of these 25 megaton nuclear missiles from Russia. These missiles will gonna hit major cities across the country, including Seattle, which was the first cases back in November 27, 2017, to contain case 17, PXVI, which is a zombie virus by the World Health Organization. Once the missiles hit, an influx of radiation have produced and it will create fallout. Fallout is a byproduct of nuclear materials.
for long exposure to fallout will result in certain death. After the nuclear missiles hit the U.S., atmospheric and climate change to nuclear winter status for our planet is expected to occur in 36 hours. Nuclear winter is a severe and prolonged global climatic cooling effect that is hypothesized to occur after widespread firestorms following a large-scale nuclear war and the K-17PXVI pandemic. Any remaining survivors must remain in your shelters, as food and water supplies are run out due to the pandemic. The permanent fall of the United States is almost certain, as radiation will become resistant to Plaxia virus vaccines. Nuclear missiles will hit in 15 minutes. Do not go outside, as the Plaxia virus particles would be dangerous. The final broadcast will occur in 12 hours. Please stay tuned.